નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિતલ ભગત. ભાવનગર વાસીઓ માટે આજે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. છેલ્લા 8 મહિનાથી બંધ પડેલી ભાવનગર મુંબઈ હવાઈ સેવા ફરી ધમધમતી થઈ ગઈ છે. કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે રામ મોહન નાયડુએ આજે ભાવનગર એરપોર્ટ ખાતેથી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. ભાવનગર એરપોર્ટ પર ગઈકાલે ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા 8 મહિનાની પ્રતીક્ષા બાદ ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ભાવનગર નવી મુંબઈ ફ્લાઇટનો કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે રામ મોહન નાયડુએ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નેમુ બાંભણિયા અને પૂર્વ મંત્રી જીતુ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિમાનના આગમન સમયે તેને વોટર સેલ્યુટ આપીને ભવ્ય અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ વાત એ છે કે પ્રથમ ફ્લાઇટમાં અન્ય મુસાફરોની સાથે 30 दिव्यांग मुसाफरों पर मुसाफरी करी आ क्षण ने यादगार बनावी हती. मुश्किल जो लग रहा था आज हमारे लिए संभव हो पाया और खास करके अब ऐसा लगेगा आप सब लोगों को कि भावनगर से मुंबई की कनेक्टिविटी हमने दी है. वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है हमारे भावनगर के लिए. काफी संबंध हम रखते हैं भावनगर से और मुंबई के साथ. ये औद्योगिक हो या अन्य किसी व्यापार का हो या रेगुलर पर्सनल संबंध हो, तो इन सब के उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है. पर मैं कहना चाहता हूं कि ये भावनगर और मुंबई की जो कनेक्टिविटी ये सिर्फ लोकल कनेक्टिविटी नहीं है. आप एक बार मुंबई से जुड़ गए तो मान लीजिए देश के साथ जुड़ गए और दुनिया से भी जुड़ गए. तो आज जो कनेक्टिविटी हमने दी है, तो कल कोई यहाँ से आदमी भावनगर से लंदन भी जाना चाहता हो, अमेरिका भी जाना चाहता हो, सिंगापुर भी जाना चाहता हो, तो मुंबई कनेक्टिविटी के जरिए आप वहां से ट्रांजिट करके वो फ्लाइट भी काफी सुविधा के साथ भावनगर को आज से मिलेगा. और जब मैं आया हूँ भावनगर तो एक चीज तो आपकी जो खुशी थी वो पर्सनली मुझे भी देखनी थी, क्योंकि उस तरह से नीमू बहन जी ने भी बताया कि एक बार आप आएंगे तो भी पता चलेगा कि कितना ये इसके ऊपर. मेरे को तो पता था कि मुंबई ये भावनगर में अलंग है, शिपयार्ड है, तो जहाज से तो आप प्यार करते ही ये तो मेरे को पता है, पर हवाई जहाज से इतना प्यार करते वो तो अभी आने के बाद एक ऐतिहासिक અને ગૌરવશાળી આજનો દિવસ છે. ભાવનગરથી નવી મુંબઈ 2 ફ્લાઇટ એનો શુભારંભ આજે થયો છે. ભારત સરકારના કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે રામ મોહન નાયડુ સાહેબ ખાસ પ્રથમ ફ્લાઇટને ફ્લેગ ઓફ કરવાના છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભાવનગરને કનેક્ટિવિટી મળે અને ભારત દેશમાં ખૂબ વધારે કનેક્ટિવિટી મળવા જઈ રહી છે. આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને અમારા મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબ કેબિનેટ મંત્રી દ્વારા અનેકના સહયોગથી આજે ભાવનગરને નવી મુંબઈ 2 ફ્લાઇટ મળવા જઈ રહી છે. हमारी ओर से नीमू बहन नायडू जी सरकार की ओर से ये शुरू तो होने जा रहे हैं. अच्छी बात है कि नायडू जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इनिशिएटिव लिया है. हमारे नीमू बहन मनसुखभाई वगैरह भी इनिशिएटिव लिया है. उन सबको भी मैं गुजरात सरकार की ओर से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ हमारे भूपेंद्र भाई की ओर से. लेकिन अब जिम्मेदारी थोड़ी हमारी भी रहती है. हमको पता है कि उड़ान स्कीम में अहमदाबाद भावनगर शुरू हुई थी. यहाँ कोमल भाई वगैरह बैठे हैं. मैंने उसको तब भी बोला था कि अगर जरूरत हमको कार की पड़ेगी, चाहे अहमदाबाद हो, नई मुंबई ये शुरू हो रही है, तो हमारे कलीग हमारे स्टाफ हम तो जा रहे हैं, लेकिन उसको भी भेजना पड़ेगा. क्योंकि कोई भी शुरुआत होती है तब एकदम से फ्लाइट उड़ती नहीं है, वो रनवे पे जाती है, बाद में वो फ्लाइट उड़ान भरती है. तो ऐसा ही कोई भी काम में होता है कि कई बार ये कॉमर्शियल फ्लाइट होती है, तो कॉमर्शियल फ्लाइट में अगर उसको वायबल नहीं होगी तो ये कॉमर्शियल फ्लाइट कभी भी डाइवर्ट हो सकती है. उसमें सरकार बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी. हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी का और नायडू जी का कि वो गैप है फंडिंग का, वो भी उड़ान स्कीम में, ये हमारी जो आज की मुंबई की फ्लाइट है वो आने वाले समय में उड़ान स्कीम में लेंगे तो वो भी सर्वाइव होगी. लेकिन फिर भी मैं आपको विनती करता हूँ, पुणे अहमदाबाद की वो शुरू करने वाला है ऐसा मुझे बताया गया सेक्रेटरी की ओर से. लेकिन इन सबको चलाने के लिए हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी ज्यादा है. मैं चैम्बर को भी विनती करता हूँ, ये बोलने से नहीं होगा. मेरा अनुभव है, यहाँ से 9 सीट की फ्लाइट अहमदाबाद की थी, बंद हो गई. सूरत भी चलती है तो 2-4 लोग जाते हैं. हमको थोड़ा सहयोग देना चाहिए हम सबको.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મંત્રી નેમુ બામભણિયા અને ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાના સતત પ્રયાસોને કારણે આ સેવા પુનઃ શરૂ થઈ શકે છે. હવેથી ભાવનગરથી દરરોજ સવારે 8:35 અને રાત્રે 8:50 એમ 2 ફ્લાઇટ નવી મુંબઈ માટે ઉડાન ભરશે. આ કનેક્ટિવિટીથી માત્ર મુસાફરોને જ નહીં પરંતુ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અલંગ શિપયાર્ડ, ધોલેરાસર અને પાલીતાણા જૈન તીર્થધામના પ્રવાસન અને વેપાર ઉદ્યોગને મોટો ફાયદો થશે. રાજન ગોહિલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, ભાવનગર. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.